Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, Good sir. afternoon. Yeah. Yes, Good sir. afternoon, sir. Yes. Good afternoon. Good afternoon. So, is this screen visible to everyone? Yes, sir. Okay. So, today we are going to start with infinite limits at infinity. Okay. Okay. So, how we shall define this limit x tends to infinity fx equal to infinity? How is this we shall define? क्या होनी चाहिए इसकी definition? If and only if so fx is approaching to infinity. So उसके लिए क्या लेना होगा? जब भी fx को अगर infinity दिखाना है तो for each k greater than 0, right? K greater than 0. अब क्या हो रहा है यहाँ पे x is also approaching to infinity. So instead of delta we will again have a bigger number. There exists M greater than 0. m greater than 0 such that fx is greater than k whenever your x belongs to a in the domain and x is greater than m. So this is the definition of limit when fx approaches infinity as you take x to infinity. Okay. So यहाँ पे क्योंकि ये this is also approaching to infinity, so यहाँ पे इसके corresponding you will get k, and because this is also approaching to infinity, so delta की जगह you will get some m greater than 0. ठीक है. So epsilon की जगह k आ जाएगा और delta की जगह m आ जाएगा. ठीक है. This is the basic difference. Similarly, you can define limit x tends to minus infinity fx equal to infinity, limit x tends to infinity fx equal to minus infinity. So बस यहाँ पे जहाँ पे भी अगर infinity को approach कर रहा है तो वहाँ पे epsilon की जगह k आ जाएगा, k greater than 0, और जहाँ पे अगर हमारा x जो है c की जगह infinite पे जा रहा है तो वहाँ पे delta की जगह m आ जाएगा. बस बाकी everything is same. Fine. Yes. Yes. Okay, so let us properly define this. Let us take a proper definition of this. So first is when limit, we need to define limits at infinity. So first is this definition. So we forgot to discuss this case. So this is okay. So what it says that lim f is defined on some domain A, and your A to infinity is contained in A. So some interval is contained in A. क्योंकि देखो वहां पे C क्लस्टर पॉइंट लेते थे, C belonging to A to be a cluster point, right? अब now we want this to be defined around infinity. Infinity के अराउंड डिफाइन करना है तो कोई एक इंटरवल होना चाहिए कंटेंट A के अंदर ना, right? Because this is not a point. So हम infinity को as a cluster point तो बोल नहीं सकते. So we want our function to be defined in some interval close to infinity. ठीक है, किसी भी एक इंटरवल में होना चाहिए. So that's why this condition is there. So instead of taking a cluster point, we are taking that this any interval of this type should be contained in A. तभी define कर पाएंगे हम limit. ठीक है? Is it clear? Yes, is it clear? Yes, sir. So now we say that limit x tends to infinity f is equal to L if and only if. So because we are taking limit to be finite, so इसके corresponding epsilon आ जाएगा. So for each epsilon greater than 0. Now because we are taking x to be infinity, so there exists k greater than. So यहाँ पे a बोल रहे हैं, a इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि you're taking this condition. जो डोमेन में है यहाँ से है. So greater than 0 की जगह you are taking this a. ठीक है? Such that for any x, क्योंकि या तो ये कर सकते हो k greater than 0, x belonging to a कर सकते हो. So that will also be defined. That this is much better definition. अगर इस तरह से लिखे limit x tends to infinity, limit x tends to infinity fx equal to L if and only if
for each epsilon greater than 0 there exists k greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon whenever x belongs to A and x is greater than k. ठीक है, so ये डेफिनेशन ज्यादा बेटर है याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पे हमने k को इंडिपेंडेंट ऑफ a कर दिया है, जो भी a दिया हो हम, क्योंकि यहाँ वी आर टेकिंग दिस कंडीशन x बिलोंग्स टू a, सो ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, इज इट फाइन? Limit x tends to infinity, Yes, sir. fx is equal to L if and only for each epsilon greater than 0 there exists k greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon whenever your x belongs to A and x is greater than infinity. Similarly, how you will define limit x tends to infinity fx equal to minus L? Yes? minus Sorry, x tends to minus infinity. L to finite है. So how you will define this? If and only if, or yes, what should be the definition? For each epsilon greater than 0, there exists k greater than 0 such that mod of fx minus L less than epsilon whenever x belongs to A and x is less than k. Yes, x is less than minus k. whenever x belongs to A and x is less than minus k. अगर यहाँ पे greater than 0 लगा रहे हो, ले रहे हो, तो then ये तुम्हें important है कि यहाँ पे माइनस लगाओ. अगर खाली k belonging to r लगाया then you can take x less than k. But अगर यहाँ पे greater than 0 लगा दिया है तो then you will have to take x to be smaller than minus k. ठीक है? Is it fine? Yes sir. Yes, sir. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख लेना. ठीक है, बट ये मैंने ऐसे लिखवा दिए. ओके, now there is a sequential criteria for this also. So sequential criteria क्या होगा इसका? Yes, limit x tends to infinity fx equal to L. What should be the sequential criteria for this? For every sequence xn in a such that xn converges to infinity, then corresponding sequence For each unbounded sequence ले सकते हो, या sequence xn sequence diverging to, for each sequence xn in A such that xn diverges to infinity. ठीक है, for each sequence xn in A such that xn diverges to infinity, the corresponding sequence fxn converges to L. Sequential criteria for limits at infinity. ठीक है, so this is sequential criteria for limit at infinity. Okay, so let us write its proper statement. So this is the proper statement, and on the similar lines we will have the sequential criteria for limit at minus infinity. ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? Your xn will approach to minus infinity, right? So this is sequential criteria for finite limit at infinity. ठीक है, so similarly we can have sequential criteria for limit x tends to minus infinity. ठीक है, ये चलो लिख ही देते हैं, so that whenever you will revise तो तुम्हें याद रहे. Sequential criteria for limit at minus infinity. ठीक है,
सो प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूं मैं, बस ऐसे ही तुम्हें याद रखने के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस fx इक्वल टू l if and only if for each sequence xn in A with xn converging to diverging to minus infinity, the corresponding sequence fxn converges to L. Okay, so similarly, so this is all about finite limit at infinity. So example, let us do an example for this. Sorry. Show that limit x tends to infinity 1 by x is equal to 0. Yes, how you will show? पहले वो ये वाली डेफिनेशन बाय प्रॉपर डेफिनेशन से करके देखते करते हैं इसे, तो क्या होगा उससे? So to show limit x, इसके लिए क्या करना होगा, किससे स्टार्ट करना होगा हमें? ये फाइनाइट लिमिट है, फाइनाइट लिमिट शो करनी होती है तो किससे स्टार्ट करते हैं? Let epsilon greater than 0. Epsilon से, so we will start with epsilon. So let, अगर इनफाइनाइट लिमिट है तो k से स्टार्ट करेंगे, अगर फाइनाइट लिमिट है तो उससे एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमें शो करना है वो लिमिट एट इनफिनिट, वो लिमिट एट फाइनाइट पॉइंट है तो वहां पे डेल्टा निकालना होगा, अगर लिमिट एट इन्फिनिटी है तो वहां पे एक m या k निकालना होगा जो, ठीक है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, ठीक है। सो वी हैव टेकन एनी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन, सो वी हैव टू फाइंड सम k greater than 0 such that one, this is, so consider 1 by x minus 0, so this is 1 by mod x. Yes, so when this will be less than epsilon, for which values of x, कैसे आएगा? We have to find some k, so कैसे लाएंगे k वो, if this will be less than epsilon? Yes, Equals to 1 upon epsilon. yes, k equal to 1 by epsilon, which is greater than 0 obviously. So this, because this is representing small number, so this will represent a very large number, right? Reciprocal of that. So now for x greater than k, 1 by, so 1 by mod x is equal to 1 by x, which is less than 1 by k, right? So from star and double star, what we have? From star and double star, we have 1 by x minus 0 is less than epsilon whenever x is greater than k. So by definition of finite limit at infinity, limit x tends to infinity 1 by x is equal to 0. Fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, we can do it for 1 by x square also, right? अच्छा, इसमें वो रिजल्ट्स भी सारे होल्ड करते हैं हमारे, कौन से वाले? Algebra of limits. So all the theorems done in algebra of limits are also true for
फाइनाइट लिमिट्स एट इंफिनिटी। सो उसी को नाम दे सकते हो जैसे, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट फॉर फाइनाइट लिमिट्स एट इंफिनिटी, ऐसे करके अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी बोल सकते हो सीधे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। और क्या रिजल्ट करा था हमने, स्क्वीज थ्योरम या कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। सो स्क्वीज थ्योरम आल्सो, सो ये दोनों होल्ड करते हैं, आल्सो होल्ड्स फॉर। सो स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं लेकिन सेम लाइंस पे अगर तुम्हें लिख लेना, अगर देखना हो, या ना भी लिखो, बस ध्यान रखना है कि स्क्यूज थ्योरम लगानी है। तो स्क्यूज थ्योरम कैसे लगेगी, अगर इफ यू कैन शो दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स such that limit x tends to infinity fx is equal to limit x tends to infinity hx is equal to some finite number l, then इसकी भी लिमिट l हो जाएगी, right? Yes, sir. Okay, so we are not writing those results, but it is all these results hold for this finite limits at infinite points also, इसलिए हम लिख नहीं रहे, बार बार repetition हो जाएगा। So proof तुम्हें आना चाहिए करना, किसी का भी पूछ सकते हैं। Now we are going to define infinite limit at infinite points, okay? तो अभी हमने finite limit at infinite points करा, now infinite limits at infinite points, infinite, okay? So how you are going to define this, ये कैसे define करोगे, limit x tend, ये तो अच्छा अभी explain कर ही दिया था, so let us just write its statement, its proper official formal definition. So this is the formal definition with all the conditions. Okay, so what it says, that limit x tends to f is equal to infinity if and only if for each k greater than 0 there exists, for each m greater than 0 there exists k greater than 0, that is limit x tends to infinity fx is equal to infinity if and only if for each m greater than 0 there exists k greater than 0 such that fx is greater than m whenever x belongs to a and x is greater than k, ठीक है। Similarly, limit x tends to infinity fx is equal to minus infinity if and only if for each m greater than 0 there exists k greater than 0 such that fx is less than m, fx is less than minus m whenever x belongs to a and x is greater than k, okay? And similarly we will have this definition, limit x tends to minus infinity fx is equal to infinity if and only if for each m greater than 0 there exists k greater than 0 such, so minus plus वहां पे अपने आप ही उसी हिसाब से आ जाएंगे। So fx is greater than m whenever x belongs to a and x is less than minus k because you are approaching to minus infinity, ठीक है। So all such definitions are there और यहाँ पे भी same results hold करते हैं algebra of limits. So all the results of algebra of limits holds for infinite limits at infinity, okay? And also squeeze theorem also holds, squeeze theorem या कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पे जा रहा है तो कंपैरिजन टेस्ट भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि वन साइड तो इन्फिनिटी होगी। तो स्क्यूज थ्योरम या कंपैरिजन टेस्ट आल्सो होल्ड्स फॉर
अच्छा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होगा? limit x tending to infinity fx equals to L first. यस बताओ. लिमिट x tends to infinity fx is equal to infinity if and only if for each sequence yes In A such that xn diverges to infinity, then corresponding sequence fxn converges to L. then the corresponding sequence fxn also diverges to infinity. ठीक है. और यहाँ पे चेंज जिस तरह से चेंज होता रहेगा वैसे यहाँ पे माइनस प्लस चेंज होता रहेगा, वो बस बाकी सारा सेम है. ठीक है. इज इट फाइन? Similarly, you can define for limit x tends to minus infinity, sorry, and limit x tends to plus minus, जो भी लेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी, जो भी डिफाइन करेंगे. ठीक है. सो सेम वे वी कैन डिफाइन इट. सो ये सारे रिजल्ट जो हमने बस ऐसे ही मेंशन कर दिए हैं कि सारे होल्ड करते हैं, हम हर कई जगह यूज कर लेंगे. ठीक है. सो ध्यान रखना है इनको. और मे बी दे माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आल्सो कि प्रूव दिस रिजल्ट. एनालॉगस प्रूफ है, सेम लाइंस पे प्रूफ है जैसे हमने वो करे हैं. सो अगर तुम्हारा मन करे तो ट्राई कर लेना लिखने का, या ना करे तो बस एक बार देख लेना कि कैसे कहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे. देयर आर स्लाइट चेंजेस, ज्यादा चेंजेस आते नहीं है. सो देयर आर वेरी स्लाइट चेंजेस दैट यू कैन डू. ओके. उतना हमने डिस्कस कर लिया है कि यू कैन इजीली मेक दैट एडजस्टमेंट. ओके. सो इसके प्रूफ मतलब देख लेना कि क्या, अगर करना हो के मन हो तो कर लेना, ना करने को मन हो तो ना करना. ओके. बट दे माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आल्सो, सो इसका ध्यान रखना. Okay, one very important theorem is this limit comparison test. ठीक है, जो infinite limits में आता है. That is very different from other results. Limit comparison test. So this result is important. Okay, so what it says is that f and g are two functions defined on A, and A is contains some interval around infinity, and gx is greater than 0 for all x greater than A. Why g? Because we need gx to be defined. Okay, so to get this defined, we need gx to be greater than 0. Okay, or as we are assuming that gx is a positive function. Suppose and that for some L belonging to R, L is not equal to 0. So this limit is not equal to 0. Then we have this. If L is greater than 0, then limit is if f is approaching to infinity, if and only if g is approaching to infinity. So f and g converge or diverge together. Okay. अगर f infinite पे जा रहा है तो g भी infinite पे जाएगा. अगर f की लिमिट एग्जिस्ट करती है कुछ फाइनाइट तो g की भी एग्जिस्ट करेगी फाइनाइट. और अगर L less than 0 है तो f will go to minus infinity if and only if g is going to infinity. ठीक है. ये L equal to 0 के केस में this test, that is limit x tends to infinity fx by gx is equal to L where gx is greater than 0 if and only if, then so if this is true, then first is that if L is greater than 0, then limit x approaches to infinity fx is equal to infinity if and only if limit x approaches infinity gx is equal to infinity. Second
if L is less than 0, then लिमिट x अप्रोचेस f इक्वल टू एक दोनों अपोजिट साइड में डाइवर्ज करेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी gx इक्वल टू इंफिनिटी. और थर्ड टेस्ट फेल्स व्हेन L इज इक्वल टू 0. सो अगर लिमिट 0 आ जाती है तो वहां पे हम ये टेस्ट नहीं लगा सकते. ठीक है, इज इट क्लियर? So let us try to write its proof. Its proof is very simple. It follows from your squeeze theorem या limit comparison या comparison test. So how to prove it? So given is limit x tends to infinity fx by gx equal to L, where L is not equal to 0 and gx is greater than 0. Okay, और हमें ये condition show करनी है. So how we will do? We will do it in two cases. Case 1 when L is greater than 0. Case 2 when L is less than 0. ये दोनों को एक ही साथ कर लेंगे वो हम. अब बताओ what next? So यहाँ पे ये आ गया. So इससे क्या आएगा? अगर fx by gx limit x tends to infinity fx by gx equal to L, what does it mean? For all epsilon greater than 0, there exists k greater than 0 such that mod of fx by gx minus L less than epsilon whenever x is greater than k. Yes. लेकिन हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एप्सिलॉन ले सकते हैं. वो कौन सा ले? L/2. मॉड L/2. ठीक है, मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि अभी वी आर टेकिंग बोथ द केस टुगेदर. वो बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा सेम चीज. सो वी आर टेकिंग मॉड L/2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0. ओके, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट देयर एग्जिस्ट, क्योंकि x कहां पे अप्रोच कर रहा है हमारा? x इज गोइंग टू इंफिनिटी, राइट? सो बिकॉज अवर x इज गोइंग टू इंफिनिटी, सो क्या एग्जिस्ट करेगा? There exists k greater than 0 such that fx by gx minus L is less than mod L/2 whenever डोमेन क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है. ठीक है, सो बिकॉज ये यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, सो x ग्रेटर देन a कर देंगे whenever x is greater than a and x is greater than k. Fine. Is it fine? Yes sir. Yes. Yes. यहाँ से ये क्या आ जाएगा? This what you get from here? fx minus gx, fx by gx minus L lies between mod minus mod L/2 to L/2, mod L/2. अच्छा, यहाँ से हमें फिर वही करना पड़ेगा. Case 1 when L is greater than 0. So यहाँ से so from star we have, so from star it follows that L minus L/2 is less than fx by gx is less than L plus L/2. Okay, whenever x is greater than a and x is greater than k. ठीक है, so that is L/2 is less than fx by gx is less than 3L/2 whenever x is greater than a and x is greater than k. So this implies, what does it imply? L/2 gx is less than fx is less than 3L/2 gx whenever x is greater than a and x is greater than k. अब क्या होगा यहाँ से?
अब देखो यहाँ से अगर gx infinite पे जा रहा है, अगर if this is going to infinity then fx will go to infinity because this is approaching to infinity, so this will approach to infinity. और अगर यहाँ इस inequality से देखो तो if this will approach to infinity, so this will approach to infinity, right? अगर इस वाली inequality का यूज करोगे तो this will imply limit x tends to infinity gx equal to infinity will imply limit x tends to infinity fx is equal to infinity, right? And if you will use this inequality then from here you will get that अगर f की limit infinite है तो g की भी infinite हो जाएगी, right? Yes. So together Yes, both sir. the inequalities, so both the inequalities together imply or you can say by comparison test it is evident that limit x tends to infinity fx equal to infinity if and only if limit x tends to infinity gx equal to infinity. So दोनों साथ में जाएंगे. Similarly you can do the case for case 2 n less than 0 follows on the similar lines. ठीक है. सो यहाँ पे अब क्या है कि l लेस देन 0 लोगे तो इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, अगेन दिस विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दिस मॉडल विल बिकम माइनस एल बाई टू, सो दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस, सो 3l/2 लेस देन fx by gx लेस देन l/2 और अगेन देन यू विल गेट द, फिर यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई करके और सेम इनफिनिट माइनस इनफिनिटी पे चले जाएंगे. ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, नेगेटिव वाला ट्राई कर लेना खुद से. Okay, sir. Okay, so let us do some examples now based on this. So first example is show that limit x tends to infinity x to the power n is infinity for all n belonging to n. Yes, how you will prove this? कोई एक फंक्शन ढूंढ लो जो इससे छोटा और वो इनफिनिट पे जाए. Right, if you can find some function which is smaller than x to the power n and that approaches to infinity, जो simple function हो X. x, लेकिन हर जगह x is not smaller than x to the power n, वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में होता है. किस में होता है? 0 to infinity. ना, 1 to infinity. if x अगर x is smaller than 1 तो पावर इंक्रीज करोगे तो नंबर विल डिक्रीज, राइट? सो Sorry, yes, sir. 1 to. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है. सो वी नो दैट हमें तो कोई एक a ढूंढना है. ठीक है, सो यहाँ पे तो 1 ही काम कर रहा है. इनफैक्ट वी कैन हैव एनी बिगर नंबर देन 1. सो वी नो दैट x is less than x to the power n for all x belonging to 1 to infinity, right? Since limit x tends to infinity x is equal to infinity, so by comparison test limit x to the power infinity x to the power n is equal to infinity. ठीक है, is it fine? Let us take another Yes, sir. example.
Another simple example that we can take is, so show that same example, but this time we are approaching to minus infinity x to the power n equal to infinity for all even natural number n. Okay, so n is even. Yes, how you will prove this? The x square is less than x to the power n in 1 to 0. उससे प्रूव कर देंगे. Yes, x square is less than x to the power n for n equal to even n, right? Yeah, इस क्वेश्चन को you can make it like this also. Is equal to infinity if n is even and minus infinity if n is odd. So we will have two inequalities here. Okay, so for even n, x square is less than x to the power n for all x belonging to 1 to infinity, right? Yes. Yes, sir. And for odd n, yes, x to the power n is less than x for all x belonging to, कहाँ पे होगा ये चीज odd n के लिए? किस इंटरवल में होगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन. हमें माइनस इन्फिनिटी के अभी ये इसको माइनस इन्फिनिटी ले जाना है, तो इसको अच्छा सॉरी एक चीज मैं भूल गया, हमें इंटरवल ये भी माइनस इन्फिनिटी वाला ही रखना है. ठीक है, व्हाई? Because we are approaching x to minus infinity, so this interval should be around minus infinity. ठीक है, so this is true because we are taking square और ये भी n भी even है, so इसलिए this is true, and for odd this is true. Now since limit x tends to minus infinity, x square is equal to infinity, and limit x tends to minus infinity, x is equal to infinity. So by comparison test क्या हो जाएगा? Limit x tends to minus infinity, x to the power n is equal to infinity if n is even, क्योंकि even वाले केस में ये वाली inequality यूज हो रही है, और यहाँ पे this is approaching to infinity, so this will approach to infinity, और odd वाले केस में ये वाली inequality यूज हो रही है because this is approaching to minus infinity, so this has to approach to minus infinity. Fine. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what we are going to do is, question is, show that for the polynomial px equal to an
x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus a1 x plus a naught. Okay, a naught equal to 0. Limit x tends to infinity, px is equal to infinity if an is greater than 0 and minus infinity if an is less than 0. So how you will show this? Yes. क्या करेंगे इसमें? We can use limit comparison test. Limit comparison के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे बताओ? px upon gx. x to the power n लेंगे, x to the power n. ठीक है? Okay, so let gx equal to x to the power n for all x belonging to R. और n जो है हमारा ये नेचुरल नंबर है, so this is there. Okay. So clearly gx is greater than 0 for all x belonging to 1 to infinity. ठीक है? Also px by gx क्या होगा तुम्हारा? px by gx क्या होगा? an plus an minus 1 1 by x plus an minus 2 1 by x square plus a1 1 by xn minus 1 plus a naught 1 by x to the power n, right? Is it right? Yes. Yes, sir. So we can write it like this: an plus summation n equal to 1 to कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है. n so k equal to 1 to n करते हैं क्योंकि n तो वो है यहाँ पे. k equal to 1 to n an minus k and 1 by x to the power k. ठीक है? Yes, we can write like this. Now by algebra of limits, what we will have? Limit x to the power infinity px by gx will be equal to this an plus summation k equal to 1 to n an minus k, right? Limit x, yeah, इसको 1 upon limit x to the power infinity 1 to the power, oh sorry, x to the power k. Right? Is it right? Yes, sir. अब अभी हमने क्या प्रूव करा था थोड़ी देर पहले? So as proved earlier, ठीक है, ये प्रूव कर देना एग्जाम में इस चीज को, छोटा सा है, यू कैन प्रूव इट इजिली. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी xk इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू n, राइट? हर एक नेचुरल नंबर के लिए. So using star in double star, what you will have? Using double star in star, what you will have? So this limit, this denominator is going to infinity, so this term will go to 0. So this summation will be 0, right?
This summation will be 0, so this is actually an. So by limit comparison test, so since limit x tends to infinity, gx is equal to infinity. So by limit comparison test, what we will have? Limit x tends to infinity, px equal to, पॉजिटिव के केस में दोनों एक जगह जाते हैं और नेगेटिव में अपोजिट साइड जाते हैं. So अगर ये an is positive, then px will go to infinity. If an is positive, and if an is negative, then it will go opposite of gx, so it will go to minus infinity. If an is less than 0. Is it fine? Yes. Is it fine, everyone? Yes, sir. ठीक है. So इस तरह के क्वेश्चंस और भी होंगे, प्रैक्टिस कर लेना. So we have completed now our chapter 4. ठीक है. So from next class, that is tomorrow. Yes. So tomorrow we will start with continuous functions. Okay. And are you preparing for the test, right? Yes, sir. 18th को है टेस्ट, तो याद रखना उसे. ठीक है. ओके. तो कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी टिल 17th. ओके. तो 17th तक कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी. Try to do all the questions of all each question of these exercises. ठीक है. सारे के सारे ट्राई कर लेना क्वेश्चंस. और अगर ये सारे हो जाए तो मे बी यू कैन पिक सम अदर बुक ऑल्सो फॉर मोर प्रैक्टिस. Okay. So now time is also over, so let us end this class. So anyone wants to ask any question? आज के सेशन में किसी का कुछ डाउट? No, sir. Okay. So then in that case, let us end this class. Bye everyone. Have a good day.